किस तरह का एक हद तक साइलेंट हल्ला बोल रही हूँ। कभी कभी जब कोई हल्ला बोलना चाहता है तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड आई एम दैट सपोर्ट इन द फिल्म। या सो कभी साइलेंट, और फिर जब एन मौका आता है तो मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। कैसा लग रहा है? Is it actually unimportant? No, not at all. You know, it's just important being part of this film. I believe in this film. I wanted to be working with Raji, which is why I did the film. So I think that sometimes a film is bigger than, you know, the whole is bigger than the sum of its parts. राजकुमार संतोषी की फिल्म है, जाहिर है सोशल मैसेज जरूर होगा। जी। बता सकते हैं क्या सोशल मैसेज है? सोशल मैसेज यही है कि जैसे मैंने कहा कि आवाज़ उठाने से क्या होगा, अगर हम सब मिलके एक एक जुड़ के आवाज़ उठाते हैं तो यू नो ज़रूर हम चेंज परिवर्तन ला सकेंगे। A lot of things, right from seeing people spit on the roads or throw garbage out of their cars, it upsets me. And you know, a while ago we had this campaign in college, which was a chhi campaign. When you see someone spit or when you see someone throw garbage, just say chhi. So you know, that's Halla Bol can start there in small things. Yes, of course, all the time. Yeah, you know, people would cringe when I said chi, and obviously you say chi in a manner where you're not directly saying it to them, but they feel bad about what they've done. So I think it's a great way of starting to Halla Bol. With Ajay Devgan, he's a fantastic actor, like all of us know, and it was very inspiring working with him and Pankaj Kapoor. They are such great talent. To be just sharing screen space with them, I think, was fantastic. कि इस साल में इस फिल्म के साथ हम साल भर हल्ला बोलते रहेंगे। Thank you. Just one question. I need to know what color is that and what does this color mean to you? Which color? The outfit, that saree which you're wearing. It's I think it's a wine, and it really means nothing. It's just a lovely color. विद्या, सुनने में आया कि आप थिएटर में फिल्म के बाद काफी इंटरेस्ट ले रही हैं। कहीं किसी थिएटर प्रोडक्शन में आपको देख सकते हैं? फिल्म के प्रमोशंस के लिए मैंने स्ट्रीट प्लेस किए, जस्ट टू एंड लोग अब अफवाहें फैलाने लगे हैं। मैं फ़िलहाल तो फिल्में कर रही हूँ। जब और फुर्सत होगी थिएटर में यू नो टू कॉन्सेंट्रेट, फिर शायद इंशाल्लाह करूँगी। थैंक यू।